हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे तीन पोएम्स इससे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से। लेट अस स्टार्ट। द लैम्प। लिटिल लैम्प हु मेड दी, दोस्त दाउ नो हु मेड दी, gave thee life and bid thee feed by the stream and over the mead, gave thee clothing of delight, softest clothing, woolly bright, gave thee such tender voice, making all the vales rejoice. Little lamb who made thee, dost thou know who made thee? Little lamb, I will tell thee, little lamb, I will tell thee. He is called by thy name, for he calls himself a lamb. He is meek and he is mild. He became a little child. I a child, and thou a lamb. We are called by his name. Little lamb, God bless thee. Little lamb, God bless thee. This short poem describes innocence and refers to the mystery of creation. The speaker in the poem is an innocent child who asks the lamb a series of rhetorical questions concerning its birth and upbringing. The first stanza of 10 lines mirrors the childlike quality of innocence. There is an air of gaiety, means khushi hai, which is expressed in words like delight, bright, rejoice. The lamb's own gentle nature is indicated by words like softest, woolly, and tender. The speaker, who is himself tender, young and gentle, is delighted by the sight of lamb. तो वो लैम्प को पूछता है कि आपको किसने बनाया है. Lot many question, वो काफ़ी क्वेश्चन पूछता है लैम्प से. There is a parallel in that the lamp and the child share the same qualities. Means उनमें same qualities है ना. The second stanza of 10 lines attempts to answer the questions posed to the innocent lamb. Without naming Christ, the speaker says that the maker means Christ or creator, calls himself a lamb. He shares the quality of meekness and mildness with the lamb and become a child. The lamb, the child, and Christ are one. There is the same divinity that hedges a child. That hedges means that encloses a child and a lamb as it does Christ. तो सेकंड स्टेंजा में 10 लाइन्स हैं और वो उसमें क्या ना आंसर दिया जा रहा है. इनोसेंट जो लैम्प को क्वेश्चन किए गए हैं एक बच्चे के द्वारा, उनका आंसर दिया गया है. तो क्राइस्ट का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये बताया गया है कि क्राइस्ट ने, लैम्प बताता है कि क्राइस्ट ने ही मुझे बनाया है. The diction used in this poem is very simple and it is appropriate to a child. The rhythm is like lisping number of a child. If the first stanza stresses the beauty, gentleness, and tenderness in the innocent lamb, the second stanza attributes gives similar quality to the creator, and the creator calls himself lamb or child. तो जो क्राइस्ट हैं वो बोलते हैं मैं ही लैम्ब हूँ, मैं ही चाइल्ड हूँ. नाउ द सेकेंड पोएम इज चिमनी स्वीपर. चलो इसको रीड करते हैं. When my mother died, I was very young, and my father sold me while yet my tongue could scarcely cry, weep, 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 weep. So your chimneys I sweep, and in suit I sleep. There is little Tom Dacre who cried when his head, that curled like a lamb's back, was shaved. So I said, hush, Tom, never mind it, for when your head's bare, you know that the suit cannot spoil your white hair. And so he was quiet, and then very night, as Tom was sleeping, he had such a sight that thousands of sweepers, Dick, Joe, Ned, and Jake, were all of them locked up in coffins of black. And by came an angel who had a bright key, and he opened the coffins and set them all free. Then down a green plain, leaping, laughing they run, and wash in a river and shine in the sun. The naked and white, all their bags left behind, and he opened the coffins and set them all free.
and then down a green plain, leaping, laughing, and they run and wash in a river and shine in the sun. Then naked and white, all their bags left behind, they rise upon clouds and sport in the wind. And the angel told Tom if he would be a good boy, he would have God for his father and never want joy. And so Tom awoke, and we rose in the dark, and got with our bags and our brushes to work. Though the morning was cold, Tom was happy and warm. So if all do their duty, they need not fear harm. This poem is inspired by the agitation in Blake's time against the employment of children as chimney sweepers. The agitator demanded the passing of law against this human practice. उस टाइम पे बच्चों से काम करवाया जाता था, चिमनीज को साफ करवाया जाता था. The speaker in this poem is a small child who is himself a chimney sweeper. Hence, the point of view is that of an innocent child, and the child accepts without protest the appalling conditions in the into which he is forced. Appalling means बहुत ही dangerous. The pathetic condition of a child who was sold to be used as a chimney sweeper even before he could learn to speak the word sweep correctly is heart rending. वो weep करके बोलता है. The pathos means the bad condition is reinforced when the speaker says that he sleeps in the suit. Children are innocent and meek like lambs. The children who worked as chimney sweepers were shaved. उनके बाल निकाल दिए जाते थे, उनको शेव कर दिया जाता था. The implicit comparison is with the lamb shorn of its wool. तो ऐसे ना जो कि लैम्ब होता है उनके भी तो बाल निकाल दिए जाते हैं. The lamb cannot protest. It has to accept what is done to it. So also the child has to meekly accept. There is biting irony in line 8 when the speaker says that the suit of the chimneys cannot spoil a tonsured hat. तो इसमें आयरनी एक है. तो आयरनी क्या है कि उसमें ये बोला जाता है कि वो बच्चा जो है दूसरे बच्चों को बोलता है कि ठीक है तुम्हारा हेड जो है शेव कर दिया गया है तो ये अच्छा ही है, बिकॉज जब सूट में तुम सोते हो ना तो तुम्हारे बाल जो हैं वो किसी चीज़ तुम्हारे बाल स्पॉइल नहीं होंगे. उस टाइम पे बाल ही नहीं होंगे तो स्पॉइल कहाँ से होंगे, है ना. द स्पिरिट ऑफ एक्सेप्टेंस मे बी नोटेड इन टॉम्स ड्रीम इन द 3rd and 4th and 5th stanzas. तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है इस चीज़ को. तो ये 3rd, 4th and 5th स्टेंजा में बताया गया है. अ चिमनी स्वीपर इज़ लाइक अ बॉडी इन अ कॉफिन. कॉफिन में बॉडी की तरह उसको बताया गया है चिमनी स्वीपर को. एट द चाइल्ड इज इनोसेंट एंड एंजल सेट्स हिम फ्री सो ही कैन वॉश हिमसेल्फ क्लीन एंड एन्जॉय हिमसेल्फ इन द ग्रीन प्लेन्स इन द सन. तो एक एंजल आता है, ये ड्रीम में बताया गया कि कॉफिन में वो डेड बॉडी, वो बॉडी है कॉफिन में, ऐसा बताया गया है उसके सपने में. और चाइल्ड बहुत ही इनोसेंट है और एंजल जो है उसको फ्री कर देते हैं तो वो अपने आप को क्लीन करता है, एंजॉय करता है ग्रीन प्लेन्स इन द सन, है ना उसमें. इन टॉम्स ड्रीम, टॉम के सपने में द एंजल टेल्स हिम दैट ही कुड एंजॉय एंडलेसली इफ़ ही इज़ अ गुड बॉय. गॉड वुड बी हिज फादर, हिज प्रोटेक्टर. अगर वो अच्छा है तो वो कहीं भी इंजॉय करेगा, ये बोला गया है, एंडलेसली इंजॉय करेगा. बट दिस इज़ ओनली अ ड्रीम. व्हेन टॉम woke up, it was business as usual. He had to get back to sweeping chimneys. उसको तो वही, जब सपना ख़त्म हो जाता है तो उसको चिमनीज को स्वीप करना है. In spite of the cold and discomfort, Tom was happy because he had learnt that doing his duty was its own reward. In spite of the cold and discomfort जो है Tom happy है because उसने सीख लिया है कि अपनी काम करना जो है वो बहुत ज़रूरी है और अच्छा काम करना है और उसको रिवॉर्ड मिलेगा. द कंक्लूजन ऑफ द पोएम इज़ रादर स्ट्रेंज एंड अनएक्सपेक्टेड. मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए ना, चाइल्ड लेबर को तो ख़त्म ही करना चाहिए, लेकिन उसको सपने में ये बोला जाता है भगवान के द्वारा कि तुम एक अच्छे बच्चे बने रहो और तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा. सो द कंक्लूजन ऑफ द पोएम इज़ रादर स्ट्रेंज एंड अनएक्सपेक्टेड बट द पोएम एज अ होल इज़ एन एक्सपोज ऑफ एन एविल प्रैक्टिस इन द पोइट्स डे. जो पोएम है वो एक्सपोज है जो कि उस टाइम पे एविल प्रैक्टिसेस की जाती थी ना, पोइट के दिनों में जो एविल प्रैक्टिसेस की जाती थी उनको एक्सपोज किया गया है.
चलो नेक्स्ट पोएम है द डिवाइन इमेज. नाउ द डिवाइन इमेज, थर्ड पोएम है ये ना. टू मर्सी पिटी पीस एंड लव ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस, एंड टू दीज वर्च्यूज टू डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस. For mercy, pity, peace, and love is God our Father dear, and mercy, pity, peace, and love is man his child and care. For mercy has a human heart, pity a human face, and love the human form divine, and peace the human dress. Then every man for every clime that prays in his distress, prays to the human form divine, love, mercy, pity, peace, and all must love human form. Is heathen, Turk, or Jew. Where mercy, love, and pity dwell, there God is dwelling too. This poem presents the four virtues of mercy, pity, peace, and love in direct term. मतलब चार वर्च्यूज बताए जाते हैं मर्सी, पिटी, पीस एंड लव के डिफरेंट डायरेक्शंस में. जैसे द सिंप्लिसिटी ऑफ इट्स स्टेटमेंट एंड इट्स वैलिड मीटर रिमाइंड्स अस ऑफ द हिम्स ऑफ द इसाक वॉट्स एंड अदर हिम राइटर हु इन्फ्लुएंस्ड ब्लेक. देखो मैं हमने पहले भी पढ़ा था ना कि विलियम ब्लेक जो है वो उनके मॉडल पे काम करते थे. इसैक वॉट्स एंड दूसरे हिम राइटर्स थे उनकी तरह ही उन्होंने मॉडल यूज़ किया था. मतलब उन्होंने बैलेड मीटर यूज़ किया था एंड सिंपल स्टेटमेंट्स थी उनकी, है ना. दीज क्वालिटीज़ आर आइडेंटिफाइड विद गॉड एंड हिज चाइल्ड मैन. गॉड ड्वेल्स इन मैन. गॉड जो है आदमी में वास करते हैं. हेंस द ह्यूमन फॉर्म इज़ डिवाइन, इसीलिए ह्यूमन फॉर्म भी डिवाइन है. लविंग मैन इज़ लविंग गॉड. लविंग मैन जो है वो लविंग गॉड है. द पोएम शुड बी रेड विद द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट इन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस विच इज़ अ मोर डिफ़िकल्ट पोएम. तो इस पोएम को ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट के साथ पढ़ना चाहिए जो कि पार्ट है songs of experience का. The virtues listed above become perverted in the second poem. They are now false virtues. Okay, human experience perverts the brain. Perverts means spoils the brain. ठीक है. Okay, now thank you so much. आप मेरे please subscribe my channel. और हम नेक्स्ट वीडियो में we are going to do सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. इसमें भी हम 3 पोएम्स करेंगे. थैंक यू सो मच.